जब तक दूसरे लोग आते हैं, let's start with a quick concept, which is the relationship between fidelity and trace distance. So the general relationship between fidelity and trace distance is actually an inequality. But for pure state, we can come up with an equality. So let me first find out the relationship for pure state, and then we can generalize it to the mixed state. So suppose we have a state psi and phi, and let's compute the fidelity between these two states. So let's say this is state psi, and suppose this is state phi. And we can do it several ways, but the easiest way to do is this, that we say that, let's say I choose a basis, let me call it 0 and 1, but they can actually be any two orthogonal bases, okay, such that the angle between this vector psi and this basis is theta by 2, and the angle between these two is also theta by. So I orient these basis vector in such a way that they both have the same angle from both sides with these states. So उससे फायदा ये होगा कि I can write, let's say psi as cosine theta by 2, because this has a projection theta by 2, and then its projection on the one state is sine theta by 2, and phi I can write as phi would be sine theta by 2 on 0 axis and cos theta by 2 on 1 axis. So this then means that we can find this state rho like this as cosine theta by 2 sine theta by 2 cosine theta by 2 sine theta by 2. This becomes a matrix cos square theta by 2 cos theta by 2 sine theta by 2 cos theta by 2 sine theta by 2 sine square theta by 2. Similarly, the state sigma can be written as, from this thing, sine square theta by 2 cos theta by 2 sine theta by 2 cos theta by 2 sine theta by 2 and cos square theta by 2. So these are the density operators for these two pure states. Okay. So I chose this theta, this basis 0, 1 judicially, so that now when we subtract from rho and sigma, we see that the off diagonal terms go away. And if let's say talk about the trace distance, so trace distance was half trace of rho minus sigma, half trace of rho minus sigma is rho minus sigma would be cos square theta by 2 minus sine square theta by 2, which is nothing but cos theta 0 0, and that would be minus cos theta. So for this matrix I have to find this positive operator. अच्छा, ये ऑलरेडी जो कोई डायगोनल है, तो इसका जो मॉडुलस है जस्ट दी मॉडुलस ऑफ डायगोनल एंट्रीज. सो इसका मॉडुलस बन जाएगा cos थीटा, तो इसका ट्रेस आ जाएगा 2 cos थीटा.
तो 2 से गया, so the trace distance is cos theta. In Fidelity, I can compute directly because you remember for Fidelity we had this thing. अगर एक प्योर स्टेट है और दूसरी को स्टेट सिग्मा है, तो फॉर सिग्मा I can put phi, so this becomes psi phi. Okay, because when you put this sigma over here, this is psi phi into phi psi, और उसका मॉड स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से गया वो आ जाएगा, और इसका अगर आप इनर प्रोडक्ट लें तो बनेगा cos theta by 2 into sin theta by 2 plus sin theta by 2 into cos theta by 2, तो ये बन जाता है sin theta, इसका मॉड आ जाएगा sin theta, which means for pure state the relationship between fidelity and trace distance is 1 minus square root. So this is the relationship between fidelity and trace distance for pure states. Sorry? हाँ, हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे हैं फिडेलिटी और डिस्टेंस में, ठीक है। तो उसके लिए बिफोर वी फाइंड दिस रिलेशनशिप फॉर जनरल मिक्स्ड स्टेट्स रो एंड सिग्मा, तो हमने प्योर स्टेट्स में रिलेशनशिप फाइंड किया, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव सम स्टेट रो एंड फाई, सो द रिलेशनशिप दैट कम्स आउट विद फिडेलिटी इज इक्वल टू 1 minus d square. Now for mixed state, so हमारे पास ये आ गया ना, ये इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 minus f square जी। हाँ हाँ, क्योंकि वो रो माइनस सिग्मा ऑपरेटर बन जाता है cos थीटा 0 0 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो उस ऑपरेटर का वो मॉडुलस तो फाइंड करने का वो तरीका ना, ए डैगर ए स्क्वायर रूट, तो वो करें तो अगर डायगोनल मैट्रिसेस हो तो यू डोंट इवन नीड टू डू दैट, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सो दिस इज ए मॉड, सो अगर ये डायगोनल है तो ये ऑलरेडी हर्मिशियन है, ठीक है ना, क्योंकि और रियल भी है जैसे इस केस में, तो ए इज ए, सो दिस इज ए स्क्वायर रूट, सो दिस इज एसेंशियली ए मॉड के जो डायगोनल एंट्रीज है उनका मॉडुलस ले लें आप, ठीक है। तो डायगोनल एंट्री का मॉडुलस तो cos थीटा आ गया, तो सम करेंगे तो 2 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, ओके। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। अब इफ यू रिकॉल, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस थ्योरम दैट trace distance is contractive for trace preserving operator, और channels, और अगर आपका जो चैनल है वो let's say you have this channel as partial trace, ठीक है। partial trace जो है वो होता है कि let's say you have some joint state A B, and if you trace out let's say system B, you get this thing. So this partial tracing is also a quantum channel, हमने इसको प्रूव भी किया था that this is a trace preserving completely positive quantum channel. So इसका मतलब है कि अगर आप की कोई joint state इससे पास करती है रो ए बी और कुछ सिग्मा ए बी, तो यहाँ पे आपको रो ए सिग्मा ए मिलता है, तो इनका जो डिस्टेंस है इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर आप का चैनल इस तरह से है कि योर स्टार्टिंग स्टेट्स आर प्योर, सो दिस इज ओवर ए बी, suppose they have been obtained by purification of some state rho and sigma, कि आपके पास कोई मिक्स स्टेट थी रो और सिग्मा,
तो आपने उनको प्योर कर लिया, यानी डबल सिस्टम ए, ये ए पे थी, आपने एक बी सिस्टम लगा के तो वो जो डबल सिस्टम है उसके करस्पॉन्डिंग प्योर स्टेट्स हासिल कर ली, राइट। तो अब इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो, और जो इनके दरमियान में डिस्टेंस है, देयर इज दिस रिलेशनशिप दैट दिस d rho sigma is going to be less than equal to d of psi phi, right? So इसका मतलब है कि ये जो इक्वालिटी है फॉर प्योर स्टेट्स, this can be converted to an equality for these states because this distance is going to be smaller than this one. So this is a relationship that is, satisfied by the two measures. Or by the way, the fidelity है ये भी when you go from pure states to the mixed states, this is only going to decrease, which means that this one minus something would increase, so this would still hold. Okay, so that's all that I had to say about the static measures of distance. जी, आप उस वक्त थे नहीं थे जब हम बता रहे थे। तो कोई भी दो स्टेट्स के दरमियान में कुछ एंगल होता है ना, है? तो हमने उनको लिखना था किसी बेसिस में, ठीक है। तो एक और चूंकि जो दो स्टेट्स हैं, यू कैन ऑलवेज रिजॉल्व देम इन ओनली टू अलोंग टू बेसिस वेक्टर, क्यों? क्योंकि दे विल ऑलवेज फॉर्म अ प्लेन, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं। तो अब देयर आर मेनी वेज ऑफ चूजिंग, यू कैन से वन थिंग लाइक दिस, ये एक स्टेट है, एक ये स्टेट है, लेट्स से दिस मेक सम एंगल अल्फा, दिस मेक सम एंगल बीटा, राइट। तो आप इसके कंपोनेंट्स लिख के यू कैन वर्क अराउंड, या आप इस तरह से कर सकते हैं। लेट्स से यू से दैट दे मेक सम एंगल थीटा विद ईच अदर एंड सम एंगल हियर, ओके। बट दिस इज, ये जो बेसिस है, यू कैन ऑलवेज चूज इट वेयर एवर यू वांट। एक सिंपल चीज वैसे ये भी हो सकती है दैट आई चूज जीरो अलोंग दिस थिंग एंड द अदर वन अलोंग दिस, राइट। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है, जो डिस्टेंस है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द टू, इट डजंट मैटर क्या बेसिस क्या चूज करते हैं, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द बेसिस। तो देयर आर सेवरल वेज, आप जो मर्जी चूज कर लें, ठीक है, इट डजंट मैटर। तो मैंने वो एक पर्टिकुलर तरीका वो यूज किया जिसमें मैथ्स जो है ना, इट बिकम्स इजियर। हाँ, तो एक ही रखा हुआ है, एक ही पैरामीटर है ना। ये देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आप उसी से ले लें आप, लेकिन मैं दोबारा बना देता हूँ। एक साई है, एक फाई है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि आप इस तरह, आप बताएं किस तरह बेसिस चूज करना चाहते हैं। तो लेट्स से ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है, और इनके दरमियान में एंगल हो गया बीटा माइनस अल्फा। सो यू कैन डू दिस, ठीक है। तो साई आ के कंपोनेंट बन जाएंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फाई के बन जाएंगे कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है। तो आप वो साई फाई लिखें, देन यू कैन वर्क अराउंड रो एंड सिग्मा, वो जो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। और रो माइनस सिग्मा फाइंड करें, फिर उनका आप इस तरीके से ये जो भी बनता है ये फाइंड, बल्कि ये बनेगा, ठीक है। फिर उसके आइगन वैल्यूज फाइंड करें, फिर उन आइगन वैल्यूज के स्क्वायर रूट लेके उनको ऐड करें, एंड यू विल सी यू एंड अप विद द सेम रिजल्ट वेयर थीटा वुड बी दैट द वे दैट्स रिटन ओवर देयर, ठीक है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर चॉइस है, इट जस्ट मेक्स द मैथमेटिक्स इजियर, बट इट्स स्टिल जनरल इनफ। ओके,
विद थोड़ा सा इनिशियली लगता है कि पता नहीं वो जनरल क्यों नहीं है। देखें जो आपके रिजल्ट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट, कि ये जो दो वेक्टर हैं इनको आप कैसे लेते हैं। एक दूसरा बंदा अगर ये चूज कर लेना बेसिस, परहैप्स आप में से कोई अगर सियाना बंदा है तो probably they will go like this to reduce the number of parameters. Let me now take this as 0 axis and this as 1. ठीक है, इस फिर psi जो है it will just be equal to 0, right? इसमें एक ही कंपोनेंट होगा, psi would be 1 and 0. ठीक है, और जो phi है ये let's say this angle is some alpha, तो इसका cos alpha का sin alpha होंगे, and you still do the same thing and at the end you will see the result would exactly be the same, because it doesn't matter कि आप basis कौन सी choose करते हैं। हाँ, देखें ना आप लेट्स से फर्ज करें आप अगर ये मेरी दो फिंगर्स हैं, ये एक 0 है ये 1 है, सो I started from here and I started rotating in such a way that I stopped when my angle from this side and this side were the same. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे किया तो ये 0 है और इसका कुछ एंगल है, तो जब मैं रोटेट करना शुरू किया तो ये एंगल कम होता गया, ये बढ़ता जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा ना कि ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हर सूरत में पैरामीटर एक ही है, इसमें भी पैरामीटर आपका बीटा माइनस अल्फा ही है, इधर भी पैरामीटर आपका यही है अल्फा, जो भी आप कह लें कि इट शुड ओनली डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द स्टेट्स, और वहां पे एंगल बिटवीन द स्टेट्स है पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि जो टोटल एंगल पाई बाय 2 है वो पूरे क्वाड्रेंट का, तो वो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो उसका बस ये फायदा है कि द मैथ इज इजी, मैं आई डिडंट वांट टू फाइंड द आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर लेटर ऑन, तो वो जब रो माइनस सिग्मा किया तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट डायरेक्टली 0 हो गए, सो आई इट वाज इजी फॉर मी टू फाइंड द ट्रेस। ठीक है, तो आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आते, नमाज पढ़ने तो नहीं चले गए हैं? नहीं असर की चाहिए यार, इतना देर तो नहीं लगती थी, आपने लगा दी है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें आज आखिरी दो क्लासेस, वरना नेक्स्ट से हम वो गैप ही बढ़ा लेते हैं क्लास में। ऑल राइट, ओके, अब जो है लेट्स discuss the final topic. This I'm not going to introduce new mathematics, a definition, a couple of definitions, but based on fidelity. So first करें कि आपके पास एक quantum map या एक channel है, and we want to see that how much information is preserved when our quantum state passes through it, and what are the ways in which we can quantify एक तो इसका तरीका हो सकता है डिस्टेंस फाइंड कर लें, ये जो इनपुट स्टेट है, लेट्स से अगर सपोज फॉर नाउ दैट द इनपुट स्टेट इज प्योर स्टेट, सो ये इनपुट डेंसिटी मैट्रिक्स हो गया, तो आउटपुट डेंसिटी मैट्रिक्स होगा ये वाला, एंड वी कैन फाइंड द ट्रेस डिस्टेंस या फिडेलिटी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, एंड दिस वे आई कैन क्वांटिफाई दिस चैनल। ठीक है, ये चैनल जो है इट कैन जस्ट बी नॉइज, or it can be some unitary operator itself as well. It's a noisy it's a something that is modeling a unitary operator. For example, quantum computer mein suppose you want to perform this X gate or some head mud gate or some other, let's say in general some unitary gate, but instead of this we might end up applying uh, uh, a non-unitary evolution operator. So for example, for this case, if your environment is depolarizing noise, then we know that this E rho, we can write it like, let's say with probability P, you get this totally mixed state, and with probability 1 minus P, you get your state as it is. And if you, let's say, have your quantum computer operating
in a depolarizing noisy environment, then this U can be modeled as with a channel like this. So let's say the input with probability 1 minus P undergoes this unitary evolution that it should, but there is a probability P of this ending up in noise. या अगर आप बात करते हैं phase flip noise की, so phase flip noise में if this is just a noise, then let's say with probability 1 minus P, I get my state as it is, but with probability P, the Z operator is being applied to the input state. And if your quantum computer is operating in a noisy environment, then we can model that, this noisy gate, like with probability 1 minus P, this noisy gate is being applied, and with probability P, Z rho Z. That is a phase flip noise, or so on. So suppose we have a process, either a noisy channel or maybe a noisy quantum computing operation that is being applied to the input state. So how do we quantify the impact of different channels or different noises? And one of the ways in which now most people, quantify it is the one that we are going to discuss right now. And it's used to benchmark different, gate implementation. मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ quantum computing implementation develop करते हैं, and then for their gates or for their hardware they report what they call fidelity. So it's and that's what I'm going to define. They actually, the word that the complete word is minimum fidelity, but they just use fidelity. And it's like this, that we quantify this thing with something like this. That what you do, you compute fidelity between the input and output state, but then minimize it over all possible input states. उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात हो सकता है कुछ ऐसी इनपुट होती हैं कि उस चैनल का या उस नॉइजी इन्वायरमेंट को उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता. So whatever is the input, you get at the output. So उस सूरत में लगता है कि fidelity बहुत ज़्यादा है. So but to accurately report the impact of noise, what you should do, you should check what is happening for different types of inputs. And then fidelity should be something which is the minimum over all possible input states. Let me give you a couple of examples. For example, for depolarizing channel, अगर हम input और output की fidelity की बात करें, so let's say this is the input state and the output state is some rho given by that. ये input state अगर ये है और जो output state है वो है 1 minus P this plus half P I. Okay, क्योंकि ये रो है, ये इनपुट पे थी तो आउटपुट उसी तरह से मिल रही है, बट देयर इज सम नॉइज. तो इसकी और लेट्स से जो दूसरी स्टेट है, यू कैन कॉल इट जस्ट लाइक दिस. सो इन दोनों की जो है वो हम फिडेलिटी मेजर करते हैं. सो ये इनपुट है, ये आउटपुट है. सो दिस वुड बी, और चूंकि ये एक प्योर स्टेट है, एक इम्प्योर है, सो आई कैन यूज दिस एक्सप्रेशन जो हमने डेवलप किया था फॉर मिक्स एंड फॉर प्योर स्टेट. तो ये आ जाएगा साई, सिग्मा की जगह पे आ जाएगा इस दफा ये वाली जो है. सो 1 माइनस पी साई प्लस हाफ पी दिस. अच्छा, ये साई इसके साथ 1 हो गया, ये साई इसके साथ 1 हो गया, सो ये आ गया 1 माइनस पी, और यहाँ पे ये आइडेंटिटी है. सो साई आई साई इज 1, सो दिस इज half p, so this is 1 minus half p. इस सूरत में देखें जो fidelity है, it's independent of input state. So for all possible input states, the fidelity of input output is 1 minus half p, which means that the distance between the states is decreasing.
All right, but let's say if we have instead of depolarizing channel, let's say we have a dephasing channel. Dephasing जो है वो ये वाला, अगर ये हमारे पास है तो फिडेलिटी क्या होगी? फिडेलिटी होगी साई 1 माइनस पी रो प्लस पी जेड रो दिस. सो इस पे तो 1 माइनस पी आ गया, लेकिन यहां पे अब आ जाएगा प्लस पी साई जेड रो जेड साई. और इनपुट स्टेट है हमारी ये वाली, तो यहां पे ये पुट कर दें. सो दिस विल बिकम 1 माइनस पी प्लस पी साई जेड साई मॉड स्क्वायर स्क्वायर. अब ये देखें, ये जो फिडेलिटी है इट्स फंक्शन ऑफ साई. क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनपुट जो है यहां पे वो जीरो स्टेट है, अगर साई जीरो है तो जेड जो है वो जीरो को क्या करता है? 1 कर देता है. एंड 1 into 0 is 0. So this term goes away and your fidelity is 1 minus p. And if your zero, if the input state is plus state, let's say, so plus state को z क्या करता है? नहीं सॉरी, मैंने गलत बोला. जीरो स्टेट को z जो है वो जीरो रहने देता है. ठीक है. सो 0 into 0 is 1. So your fidelity is 1, क्योंकि 1 minus p plus p is 1. So it mean अगर इनपुट स्टेट जीरो है या इवन 1 भी अगर 1 है तो z 1 को माइनस करता है ना, -1. लेकिन 1 into 1 फिर 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर हो गया तो ये फिर +1 हो गया, फिर 1. तो इसका मतलब है जो डीफेजिंग चैनल है इसमें अगर इनपुट 0 हो या 1 हो, देन देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ दैट नॉइस. सो इट्स एसिमेट्रिक नॉइस. अलबत्ता अगर इनपुट स्टेट प्लस स्टेट है तो जो प्लस स्टेट है उसको जो z है वो माइनस में कन्वर्ट कर देता है, और माइनस और प्लस का इनर प्रोडक्ट जीरो होता है. एंड योर फिडेलिटी इज देन लेस देन 1, व्हिच इज 1 minus p. सो इस सूरत में द रिपोर्टेड फिडेलिटी would be 1 minus p, because we define the fidelity of this noisy channel as minimum over all possible input state, which in this case is this thing. Similarly for gates, let's say you construct some gate u, and then you have some depolarizing noise. तो उस सूरत में जो fidelity है वो होगी psi, or for this input the output is with probability 1 minus p, and with probability p it's half I. So this psi into all of this is 1 minus p u psi u dagger plus p half I. ये आ जाएगी 1 minus p psi u psi, and then psi u dagger psi. So this would be this mod square, because there's one thing psi u psi and the other psi u dagger psi, so एक दूसरे का वो conjugate है, so it's mod square plus p by 2 as it is. अब जो fidelity है depends on this u operator as well. अगर ये u identity है then this is 1 and this is independent of u. But if let's say this u is Hadamard operator, आपने एक Hadamard gate जो है वो implement किया है, so then this will be dependent on psi, and you will have to work out okay, what's the value of psi that makes this quantity minimum, and that's how you can compute the fidelity of this gate. Experimentally लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि they give it
different input states, and experimentally they measure the output state for whatever gate they have implemented. And each time whatever state they get, they compute the fidelity for that output for this input, and they come up with uh, some curve like this, that as a function of different size they have this fidelity. And suppose for some inputs it's close to 1, but some input it might be close to 0.7. So the fidelity of this gate that they will report would be 0.7, which is a minimum value of this fidelity. रिवर्सेबल तो ये भी नहीं है, हमें नॉइज मॉडल का तो पता है जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, बट द फ्रॉम द आउटपुट यू कैन नॉट गेट द इनपुट बैक. नहीं, आप स्टैटिस्टिक्स तो आप बता सकते हैं कि ये जो आउटपुट है इसकी इनपुट स्टैटिस्टिक्स क्या होगी, ठीक है. सिमिलरली, लेकिन बट फॉर अ गिवन आउटपुट यू कैन नॉट टेल कि एग्जैक्टली किस इनपुट से ये आउटपुट आई है. और अगर आपका नॉइज ना हो, यू हैव ओनली यूनिटी ऑपरेशन, यू कैन ऑलवेज टेल वेयर इट केम फ्रॉम, बिकॉज यूनिटी ऑपरेशंस आर रिवर्सिबल. सो नॉइज, तो आप सही कह रहे हैं कि अगर तो हमें उसका हर चीज का मुकम्मल पता हो तो देन इट्स नॉट नॉइज. लेकिन यहाँ पे वी डोंट नो कि कब जो है वो स्टेट लेट्स से मिक्स स्टेट में जाएगी, कब जो है वो नहीं जाएगी. देयर इज प्रोबेबिलिटी. हाँ. So any questions so far? This, by the way, sometime is called, जब आप गेट की बात करें, it's called gate fidelity. And when you're just trying to model the environment, then that's just called fidelity. Okay, so let's as a quiz try to do two things. Find fidelity for bit flip channel and find gate fidelity of Hadamard gate in bit flip noise. इसको मिनिमाइज करें फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स. सो फॉर बिट फ्लिप नॉइज, और इसमें यूनिटरी की जगह पे यू विल हैव द Hadamard ऑपरेटर.